चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Wonderland Limited has excess cash of rupees 20 lakhs which it wants to invest in short term marketable securities. उनके पास 20 लाख रुपए का एक्सेस फंड्स है, उनको मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है. एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट विल बी रुपीज 50,000. इन्वेस्ट करने का 50,000 का खर्चा है. द सिक्योरिटीज इन्वेस्टेड विल हैव एन एनुअल यील्ड ऑफ 9%. वो हमको 9% का रिटर्न देगा. द कंपनी seeks your advice as to the period of the investment so as to earn, highlight the portion, pre-tax income of 5%. That is the question. तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि हमको कितने समय तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा so that say we get a pre-tax income of 5%. That is the question. I request all of you to go through the question, please. Yeah, everybody is requested to pay attention. We can say something like this: net income is equal to gross income माइनस एक्सपेंस. देखो ग्रॉस इनकम में क्या होगा, वी अंडरस्टैंड दैट से हमारे पास 20 लाख रुपए का फंड है जिसको इन्वेस्ट करने से हमको क्या मिलेगा, 9% का रिटर्न मिलेगा. व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर विच द इन्वेस्टमेंट इज सपोज टू बी मेड? दैट इज द क्वेश्चन. सो दैट वी गेट से रिटर्न ऑफ 5%. सो नेट इनकम क्या होगा, 20 लाख इंटू 5%. और हमको एक्सपेंस क्या दे रखा है, हमको एक्सपेंस दे रखा है 50,000. So we are required to make the calculation over here. Let's say what is the time period for which we are supposed to make investment so that say we get a return at the rate of 5%. So we understand that say the 5% into 20 lakhs is 1 lakh. 9% of 20 lakhs is 1,80,000 into n divided by 12. और ये 50,000 को हमने शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. सो प्लस 50,000. So we understand that so the n will be found as balancing figure. N is required to be found as 1,50,000 divided by 1,80,000 into 12. 150 divided by 180 into 12. That comes to 10 months. तो हमको 10 महीने तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. फ्रेंड्स, हमारे कैलकुलेशन में हम लोग ऐसा एक छोटा सा अजम्पशन कर रहे हैं कि जो भी एक्सपेंस हमको करना है ना, वो हमको इन एरियर्स करना है. यानी क्या होगा कि हमको इनकम मिलेगा, उस पर से हमको एक्सपेंस करना है. ऐसा हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं. I'm sorry, this is n divided by 12. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आप कैलकुलेट करो एंड पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. द मिनिमम पीरियड फॉर विच फॉर द कंपनी टू हाईलाइट द पोर्शन ब्रेक इवन इट्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ओवर टाइम वैल्यू ऑफ मनी. चलो अपने आप कैलकुलेशन कीजिए आंसर का. सो आंसर विल बी कैलकुलेटेड लाइक दिस फॉर द सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोग लिखेंगे मिनिमम पीरियड फॉर द कंपनी to break even its investment expense.
यानी ये पूछा है कि कितने समय के लिए एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सो दैट सभी हमारा वो 50,000 का खर्चा निकल जाए। तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि नेट इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस इनकम माइनस एक्सपेंस। नेट इनकम क्या होगा? 0। ग्रॉस इनकम क्या होगा? 20 lakhs इंटू 9% इंटू n डिवाइड बाय 12 माइनस 50,000। अगेन एज आई टोल्ड यू दैट से हमारा अजम्पशन ये है कि एक्सपेंस विल बी incurred एट द एंड ऑफ द पीरियड। सो आंसर विल बी फाउंड लाइक दिस। ये 50,000 को ऑपोजिट साइड शिफ्ट किया is equal to 20 lakhs into 9%, 1,80,000 into n divided by 12। तो n क्या होगा? n will be 50,000 divided by 1,80,000 into 12। So you have to invest at least for 3.33 months to recover the expense। उसके बाद आपका इनकम शुरू होगा। Right on answer? For above calculations, we assume that expenses will be incurred at the end of the period। Full stop। तो a small revision of the answer। First part of the question में हमको ऐसा पूछा है, let's say what is the time period for which we have to make investment so as to get a return of 5%। So 20 lakhs का 5% कितना होता है? So it is an amount of 1 lakh। तो 1 lakh का इनकम चाहिए and that is of course after meeting with the expenses of 50,000। so मेरा ग्रॉस अप इनकम होना चाहिए 1,25,000। 1,80,000 एनुअल इंटरेस्ट इनकम है इंटू n डिवाइड बाई 12। सो द n कम्स टू 10 months। यानी हमको एटलीस्ट 10 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो इतना रिटर्न मिलेगा। दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा है व्हाट इज द मिनिमम पीरियड टू ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का मतलब क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी जो हमारा ग्रॉस इनकम माइनस एक्सपेंस के हिसाब से नेट इनकम हमारा 0 हो जाना चाहिए। ग्रॉस इनकम में n डिवाइड बाई 12, n का वैल्यू हमको पता नहीं है। एक्सपेंस 50,000 और ये 0 लिया क्योंकि ब्रेक इवन है एंड n इज फाउंड एज 3.33 months। सो ऊपर के कैलकुलेशन हमने ऐसा अज्यूम किया इंपॉर्टेंटली द एक्सपेंसेस विल बी इंकर्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड।